Hi guys, I'm Kanika. I'm a legal consultant and a free legal consultant and a legal content writer at Labor Law Advisor. In this webinar, I and Ms. Shweta, we both will be talking on competence of non-employment bonds. And so here we have started a new platform through Labor Law Advisor. Labor Law Advisor parent platform which works on topics like financial advisories and also has a niche in labor laws also. And our primary platform is BizWiser.lla. BizWiser mainly deals in finance, tax, HR, and legal, and also deals with business case studies. Uh, there is live with me Ms. Shweta ma'am. Shweta ma'am is an advocate and enrolled in Bar Council of Delhi and also is the legal head at Labor Law Advisor. Ma'am would be conducting the session. Ma'am, please. Thank you, Kanika. Hi, everybody. My name is Shweta Velayathan. I'm an advocate by profession. Kanika is one of my teammates who works with me at Labor Law Advisor. Both of us are part of the legal team here, and we have 5 other members who work with us in different capacities. So today we are going to be talking about the validity of non-compete clauses and non-compete contracts. And in this, as part of this session and this webinar, we're going to be talking about non-compete contracts. Like, what are non-compete contracts? ये क्या होते हैं, इनके contents क्या होते हैं, ये किसके बीच में साइन किया जाता है. उसके अलावा हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि इनकी वैलिडिटी क्या होती है. व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ नॉन कम्पीट कॉन्ट्रैक्ट्स, टू व्हाट एक्सटेंट आर दे वैलिड, आर दे लीगल, कैन दे बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट एम्प्लॉयज. In the third part, we'll talk about such restrictive covenants which are entered into between two business entities. तो हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई दो फ्रेंचाइजीज या दो बिजनेसेस आपस में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करते हैं तो उसकी क्या लीगल वैलिडिटी रहती है. And in the fourth part, which will be discussed by both me and my teammate Kanika, we are going to be talking about इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कितने हद तक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या आईपी या ट्रेड सीक्रेट्स को यहाँ प्रोटेक्टेड रखा जा सकता है, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट्स इस फील्ड में कितना काम आते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. I hope everybody can see the presentation that we prepared for this session. So like I said, this is going to be about non-compete clauses and its legal validity. So just to give you all an introduction, what are non-compete contracts? ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर ऐसे क्लॉजेस होते हैं एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में या एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में. तो मतलब सर्विस एग्रीमेंट्स या कभी कभार ये नॉन डिस्क्लोजर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट, इन सब का एक पार्ट भी हो सकता है या फिर ये एक सेपरेट फुल ब्लोन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. और इसका मेन जो कंटेंट होता है, that says that any employee after working with the current employer cannot compete with the services of this current employer. तो ये एक first and foremost restriction होती है इसके under. The second type of restriction is that you can neither do that work yourself, so like as a freelancer or a consultant or like an independent contractor, but such clauses also bar you from going and working with a rival. So now imagine you're working in an industry and you have worked there for like 5 years. आप 5 साल से उसी सेम इंडस्ट्री सेम फील्ड में अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज को होन कर रहे हैं, और आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज लिखा हुआ है कि अगर आपने ये नौकरी छोड़ दी, अब इसके बाद ना आप इंडिपेंडेंटली ऐसा काम खुद कर सकते हैं और ना ही आप किसी और कंपनी के साथ जाके ऐसा काम कर सकते हैं. तो मतलब कोई कंपेटिटर जो उस इंडस्ट्री में सेम काम कर रहा हो, you can't even go and join them. Apart from that, it almost always has a clause which says that you are barred from disclosing confidential, sensitive information or trade secrets to any other party during or after the course of your employment. तो ये जो confidential या sensitive information होता है, at most of the times इसका जो protection होता है वो
प्रिस्क्राइब किया जाता है एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में। तो लाइक आई सेड, कभी कभार नॉन डिस्क्लोजर, नॉन कम्पीट, नॉन सॉलिसिट, ये सारे क्लॉजेस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का भी पार्ट हो सकते हैं। कभी कभार इनको सेपरेटली भी साइन किया जाता है, डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर पे, उनकी इंटरनल पॉलिसीज पे, प्लस डिपेंड करता है कि किस हद तक उनका डेटा सेंसिटिव है। I'll give you an example. For example, imagine you're working in the IT industry and the company you're working with has access to a lot of softwares, उनके खुद के patented programs हैं, या फिर they develop such kind of products. तो एक तरीके से the kind of work that they do, उसमें sensitivity और confidentiality की requirement बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे इंडस्ट्री में, ऐसे फील्ड्स में confidentiality या non disclosure agreement साइन करवाना और ज़्यादा important होता है। And the last type of restrictions that are prescribed in these contracts are, they say that आप similar business या profession में नहीं indulge कर सकते, या फिर कभी कभार कुछ लोग एक time period mention करते हैं, कुछ लोग एक geographical area भी mention कर देते हैं कि मतलब अगर आप अहमदाबाद की कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो उन्होंने लिख दिया कि आप 4 साल तक इस फील्ड में गुजरात में नहीं काम कर सकते, और they prescribe a certain region of the country. They tell you something like आप west part of the country में ये काम नहीं कर सकते, but you still have the option to go to the north or the south or the east and work in a similar field. So all of these types of obligations come under non-compete clauses. मतलब इनको broadly हम restrictive covenants कहते हैं। उसका मतलब ये है कि ये एक एम्प्लॉय की राइट्स और ऑब्लिगेशंस, राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है और उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस रखता है। सो वी कॉल देम रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट्स। लेकिन टुडे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे नॉन कम्पीट क्लॉसेस की, जो कि कंपटीशन के अगेंस्ट कंपनी को प्रोटेक्शन देने का एक अटेम्प्ट होता है। सो why are such contracts signed? मतलब ये clauses क्यों लिखे जाते हैं? Why do lawyers keep telling the companies कि नहीं, आपको बहुत ही watertight restrictive covenants add करने चाहिए, आप non-compete add करिए, आप non-solicit add करिए, आप poaching के against एक clause add करिए? What is the requirement? So there are twofold objectives. First of all, company चाहती है कि उनके मार्केट में जो कॉम्पिटिशन्स हो, जो कंपेटिटर्स हो, दे वुड नेचुरली वांट टू ट्राई एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग एनी अनफेयर एडवांटेज। मतलब जिन लोगों को आप ढूंढ के अपने पास एम्प्लॉय करके ट्रेन करते हैं, उनकी प्रोफेशनल क्वालिटीज डेवलप करते हैं, द companies would want that they don't go and work for a competitor in the market. And the second main objective is that they don't want any hindrance in their own business. मतलब अब hindrance कैसे आ सकता है? For example, आप अगर उनके साथ शेयर करते हैं बहुत सारा confidential information या data, or even something as simple as an entire list of the vendors or the customers that this company has. अब मान लीजिए अब ये एम्प्लॉई वो सारा डेटा लेके अगर एक दूसरे कंपेटिटर को जाके ज्वाइन करता है और उनको वो सारा डेटा दे देता है, और उससे उनका बिजनेस रेवेन्यू में इंक्रीज होता है, लाइक इफ दे आर एबल टू यूज दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, देन कंपनीज वुड नेचुरली वांट सम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज सिनेरियोज। सो ये दो ऑब्जेक्टिव होते हैं ऐसे क्लॉजेस को कॉन्ट्रैक्ट्स में इंट्रोड्यूस करने के। So now in case there is a breach, अब अगर इस क्लॉज का ब्रीच हो गया है तो उस टाइम पे कंपनी के पास क्या रिलीफ रहता है? Majorly there are 3 kinds of relief that any company can run and try to get. The first and foremost would be to go to a civil court and get an injunction. So now this is obtained under the Specific Relief Act. There are different kinds of injunctions that you can get. There is a temporary injunction, there is a permanent injunction. So what that means is आप कोर्ट गए, आपने जाके वहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल किया एंड यू टेल देम दैट ओके दिस पर्सन वाज एम्प्लॉयड बाय मी, इनके पास ये XYZ डेटा था, अब ये ले जाके कहीं और यूज कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू स्टॉप देम, क्योंकि कोई भी एक लॉन्ग टर्म जो रेमेडी होगी कि कितना नुकसान हुआ, किसी और का कितना गलत फायदा हुआ, उसका कॉम्पेंसेशन आप ले सकते हो, ऑल ऑफ दैट कैन वेट, इट कैन टेक इट्स ओन स्वीट टाइम, बट यू हैव टू स्टॉप एनी सच थ्रेट as and when it happens. So was immediate relief के लिए you go and get an injunction. Now this injunction will prohibit this employee from performing this particular act. Then we come to a monetary compensation which we call damages.
अब damages के लिए also you have to go and file a suit before a civil court and you have to say that ये XYZ डेटा लीक की वजह से मुझे इतना लॉस हुआ है, इस पर्सन को अनजस्टली ऐसा फायदा हुआ है, समथिंग वी कॉल अनजस्ट एनरिचमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन दैट यू वांट. अब वो जो एम्प्लॉय है जिसने ब्रीच किया है उनके अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हैं. एंड समटाइम्स कंपनीज ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द नेम ऑफ अ श्योरिटी. आप देखेंगे कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में एक एम्प्लॉय का नाम लिखा होता है एंड यूजुअली उनके किसी फैमिली मेंबर, उनके स्पाउस, उनके पेरेंट, गार्डियन, इनका भी नाम नीचे लिखा होता है एज अ श्योरिटी. तो इसका पर्पस ये होता है कि अगर जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस ऑब्लिगेशन को ब्रीच करे और वो चले जाए, तो आप जो श्योरिटी होती है उनके भी अगेंस्ट प्रोसीड करके ये रिलीफ निकलवा सकते हैं. सो दैट इज द रीजन वाई sometimes a name of a surety is also entered into. We'll see them in indemnity bonds में लिखा होता है ऐसा कभी कभार. So sometimes contracts also have a name of a surety. तो damages obtain करते हुए company इन दोनों के against ये claim डाल सकता है. And then we talk about return of that information. So then you have to, in a way you compel that person to return whatever data or whatever confidential information, sensitive information, trade secrets, whatever they had stolen, all that has to be returned to the original employer who is the owner of that information. So ये तीन तरह के remedy होते हैं: injunction, damages and return of information. So now in this, we'll deal with the second part, which talks about the legal validity of non-competes. तो मतलब अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि ये होते क्या है नॉन कम्पीट्स, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और ब्रीच की वजह से एम्प्लॉयर क्या क्या रेमेडी ले सकता है. नाउ हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि इसकी लीगल वैलिडिटी क्या होती है और किस हद तक एक एम्प्लॉयर इसको एनफोर्स कर सकता है एम्प्लॉय के अगेंस्ट. सो नॉन कम्पीट क्लॉज, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यू ट्राई एंड पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन एन एम्प्लॉई ताकि अगर एक बार उनका टर्मिनेशन हो जाए उसके बाद वो किसी और को जाके ज्वाइन नहीं कर सकते. अब नाउ थिंक ऑफ इट दिस वे, आपका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक आपके बीच में एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है. इट्स अ मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज. अब जहां वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप उनके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कैसे एनफोर्स कर सकते हैं? Now this is a question which not only I am asking, this is a question which courts have also asked over the course of time. क्योंकि non-competes और non-solicit, employment bonds, non-disclosure, ऐसे जो restrictive covenants होते हैं, these have a long history of litigation, like 60s, 70s onwards. ये courts में cases के तौर पे गए हैं and there have been principles laid down by different courts over a period of time. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ होता है इसको कवर करने के लिए, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ आई अंडरस्टैंड कि एक हद तक इसको लेबर लॉज या एम्प्लॉयमेंट लॉज का पार्ट माना जाता है बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉयर्स लाइक माई सेल्फ टॉक अबाउट दिस टॉपिक मोर देन द अदर कॉर्पोरेट लॉयर्स. लेकिन लेबर लॉज के अंडर कोई स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कोई एक्ट या कोई रूल्स नहीं है जो नॉन कम्पीट या फिर नॉन सॉलिसिट को गवर्न करती हो. दैट इज वाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के इंटरप्रिटेशन के लिए हम रिलाई करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को इंटरप्रेट करते वक्त या उनकी वैलिडिटी डिटरमाइन करते वक्त हम देखते हैं सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को. अब सेक्शन 27 क्या बोलता है? वो क्या, सेक्शन 27 says that if you try and bar any person from pursuing a valid trade, business or profession, मतलब आप किसी भी एक पर्सन के एक राइट को बार कर रहे हैं जो उनकी राइट है टू गो एंड परस्यू अ वैलिड ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन. अगर आप एक अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उनके साथ जिससे उनकी ये राइट बार हो रही है, तो वो अग्रीमेंट इस रिस्ट्रिक्शन के लिमिट तक इनवैलिड रहेगा. उसका मतलब उस अग्रीमेंट में और भी 15, 16, 20 क्लॉजेस होंगे. सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं हो जाता, सिर्फ एक ऐसा क्लॉज वैलिड होता है. नाउ व्हाट डज दैट मीन? मैं बहुत लीगल जार्गन्स थ्रो अराउंड कर लिए. सो दैट मीन्स दैट आप एक नॉन कम्पीट साइन करते वक्त आप एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि आपकी जब एम्प्लॉयमेंट यहाँ खत्म हो जाएगी आप जाके किसी कंपेटिटर को नहीं ज्वाइन कर सकते 5 years तक. बट प्रैक्टिकली व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? अब उस एम्प्लॉय को आपके
टर्मिनेशन के बाद दे हैव अ राइट टू गो एंड वर्क इन द सेम फील्ड. उन्होंने इतने साल तक आपके साथ इस इंडस्ट्री में काम करा है. देयर इज अ पर्टिकुलर स्किल सेट दैट दे हैव डेवलप्ड. So now what are you doing? You're trying to make sure that either that person continues working with you or they have to sit idle at home. So now can that be a legal restriction? Courts have said that no, this cannot be a perfectly legal restriction. A lot of, it has to be examined through a lens of reasonableness. उसका क्या मतलब है कि जब तक वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जब तक वो एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तब तक आप उनको बार कर सकते हो कि आप किसी और के साथ काम मत करो. Because at that point there is an existing master servant relationship, there is an exchange, there are services which are provided and there is remuneration which is paid for those services. तो वहां पे आप बार कर सकते हो कि आप किसी और के साथ जाके काम नहीं करोगे. लेकिन the second that contract comes to an end, you cannot bar that employee from going and working with a competitor. Why? Because section 27 के मुताबिक आप उनकी एक वैलिड प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस करने की राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्लॉज विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड. So now I'll speak more about it in terms of what court cases have held in India so far. इनको मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. Clauses which are applicable before termination and clauses which are applicable after termination. So pre-termination clauses के केस में there is a landmark judgment of the Delhi High Court where the court has held that if there is a restriction on competition during the employment period, then that has to be considered reasonable. क्योंकि जब तक, जैसा मैंने कहा, जब तक अब वो आपके एम्प्लॉयमेंट में है, तब तक वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं उस सर्विसेज के रिटर्न में. तो तब तक आप, यू आर एन एम्प्लॉयर इज परफेक्टली विद इन देयर राइट्स to put a restriction to say that, listen, you cannot go and work for anybody else, competitor or otherwise, during this time period. अब मैंने बोला competitor or otherwise. So now recently there has been a lot of debate on a concept called moonlighting, कि जहाँ पे एक employment जब चल रही है एक primary job में, at the same time employees try and they do a secondary gig on the side, they freelance for some extra money, or to do something that is a hobby or a passion to pursue such a livelihood. But a lot of times companies have this clause clearly written in the employment contract or the company policies. They clearly say that while you are working with us, you cannot provide services to any other entity. अब वो usually अगर वो competitor के limitation में लिखा हुआ है, even then a lot of times the HR policies also say that, listen, you cannot work for anybody else while you are working with us. So dual employment का restriction almost always एक traditional employment में रखा जाता है employees के ऊपर. But that being said, कुछ companies होती हैं जो employees को allow करती हैं to do some freelancing or work on other projects and stuff. अब इसके कुछ conditions होते हैं कि it shouldn't affect their time availability and their productivity in the primary job, or it shouldn't be with a competitor or anything of that sort. So usually उसको हम moonlighting कहते हैं, but a lot of times moonlighting की validity discuss करते वक्त भी we should also pay attention to the language which is contained in the non-compete, क्योंकि non-compete कभी कभार during the course of employment एक अलग clause बार करता है and after the course of employment एक अलग clause employee को बार करता है. So like I said, as long as it's during the course of employment, companies can bar employees from going and working for anybody else because they want to be protected from any competition. मतलब एक एम्प्लॉई जो रोज आपकी कंपनी में आके आपके ऑफिस में बैठ के आपका काम कर रहा है, naturally that person will be privy to a lot of information, a lot of confidential information that you would want to be protected. So it's very reasonable for a company to expect such people to be exclusively serving the primary employer. So it's valid during the course of employment. मतलब termination से पहले अगर non-compete sign करवाया गया है तो that is perfectly valid in India. Now we come to the second part, which is post-termination, which is 75% of the queries that we get with respect to restrictive covenants and non-competes are obviously about the post-termination time period. So
negative covenants, sometimes they also operate after the cessation of employment. Like I mentioned, companies can write in their contract that हम आप आपने ये वाली नौकरी छोड़ दी, उसके बाद आप 5 साल तक किसी कंपेटिटर के साथ काम नहीं कर सकते. अब कोर्ट्स ने रेगुलरली ऑफन बोला है कि अगर एक टर्मिनेशन के बाद आप ऐसे क्लॉज को एनफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट विल बी इनवैलिड बिकॉज ऑफ सेक्शन 27. वो डायरेक्टली इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होता है and that becomes void as per section 27 of the Indian Contract Act. However, Niranjan Shankar Golikar is one of the landmark judgments in the context of non-competes also. So यहाँ पे the court has taken a slightly different position. इस केस में employer को एक injunction obtain करने में allow कर दिया था कंपनी ने, ये बोल के कि जब restriction जो employee पे लगाई जा रही है वो reasonable है और कंसिस्टेंट विद द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में है और एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, देन दैट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन वुड बी वैलिड इन केस ऑफ अ नॉन कम्पीट. अब व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब नौकरी खत्म हो गई and services have been terminated or the employee has resigned. However, if the termination has happened and the employee is trying to move on to another legal entity, another employer, and you have a clause which says that आप 5 साल तक इनके साथ इस फील्ड में ही काम नहीं कर सकते हो, then that would be considered something unreasonable. मतलब आप 5 years, which is a long time period, उसके लिए उनको बार कर रहे हो पूरी इंडस्ट्री में ही काम करने से. So that is not something which would be enforced by any court of law. लेकिन if you have a slightly reasonable covenant where you say that okay, so this is the jurisdiction that we have, and for example this one state, and for a period of 6 months you cannot work here with any of our competitors. So that means एम्प्लॉई के पास ये ऑप्शन नहीं है कि या तो यहीं कंटिन्यू करें या फिर हम घर पे बैठे. दे हैव द ऑप्शन टू अप्लाई टू अनदर लोकेशन और अनदर company which works in a different geographical area. Or even if we go by the time period, 6 months would not be considered as unreasonable as a 5-year non-compete clause. So the courts have held that पोस्ट टर्मिनेशन भी वो प्राइमा फेसी इनवैलिड नहीं होते हैं. वहां पे भी आपको देखना पड़ेगा कि कितना उसका कंटेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है एंड कितना पब्लिक इंटरेस्ट में भी आता है. तो कुछ केसेस में नॉन कम्पीट के केस में भी कोर्ट्स ने एम्प्लॉयर्स को रिलीफ दिया है. So I'll explain more about this. Now, the courts have held that the covenant will not be held bad in law if it's a reasonable restriction. अब उसका क्या मतलब है कि अगर एम्प्लॉयर ये कोशिश कर रहा है कि उनकी कंपनी की इंफॉर्मेशन या ट्रेड सीक्रेट या फिर कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या जो डेटा ट्रेड सीक्रेट है या डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है इस नॉन कम्पीट क्लॉज से, देन टू दैट एक्सटेंट दे विल बी अलाउड सम रिलीफ. क्योंकि कोर्ट्स का ये कहना है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास भी दे हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट देयर इंफॉर्मेशन. दे डोंट हैव अ राइट to protect themselves from competition. What does that mean? So now आप ये नहीं ट्राई कर सकते कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो कभी किसी कंपेटिटर के साथ काम ही नहीं करें. अगर वो किसी और के साथ जाके काम करते हैं एंड अगर आपका डेटा लीक होता है या फिर आपका कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या ट्रेड सीक्रेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो चुरा के किसी और को एक अनफेयर एडवांटेज दे रहे हैं, तो आपके पास रिलीफ होगा. So it has to be for the protection of that confidential information. Now imagine the case if it's an employee जिनके पास कभी कोई confidential information गया ही नहीं था. They did a very mechanical manual type of job while they were employed with the first employer. अब उनके केस में आप बोल दोगे कि चलो आप 2 साल तक किसी कंपेटिटर के साथ जाके काम ही नहीं करो, जबकि आपके पास कोई रीजन ही नहीं है थ्रेटन होने का about any data leak or confidential information leakage or anything. In that case, a court is not likely to enforce that covenant. But कोई बहुत ही क्रिटिकल एम्प्लॉई है जो 7, 8, 10 साल से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल डेटा में काम करे, जिनके पास एक्सेस होता है बहुत ही हाई लेवल सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा का, जो बहुत ही कोर कस्टमर लिस्ट है, सर्विस एग्रीमेंट्स है, जो टेंडर्स के कोड्स हैं, इन सब चीज़ों का अगर किसी के पास एक्सेस है एंड दैट पर्सन वांट्स टू लीव एंड सडनली गो टू अ कंपेटिटर कंपनी, देन अगर एक डेटा लीक, एंड माइंड यू वो डेटा लीक फिर जो एलिज कर रहा है उस कंपनी को प्रूव भी करना पड़ेगा कोर्ट में, बट in case of such a situation, then a company would have a right to be able to enforce that restrictive covenant.
So now that was our second part where I talked about the validity of legal covenants. So if you guys want me to do a quick recap in like 30 seconds, pre-termination मतलब जब employment खत्म नहीं हुई है तब तक non-competes are fine, but post-termination मतलब जैसे ही services obtain होके बंद हो चुकी है and that term contract has been terminated, उसके बाद अगर नॉन कम्पीट कोई enforce करने की कोशिश कर रहा है, so then it has to be a reasonable restriction. It cannot be wholly one-sided or unconscionable. So the employer will have to prove कि मेरा कोई legitimate interest था जो मैं इससे safe keep करने की कोशिश कर रहा था, like my confidential information or trade secrets or intellectual property, मैं इन सब चीज़ों को protect करने के लिए ही ये नॉन कम्पीट एनफोर्स करने की कोशिश कर रहा था. इन दैट केस और इन सच अ सिनेरियो द कोर्ट्स आर लाइकलियर टू गिव सम रिलीफ टू द एम्प्लॉयर. So now we move on to the third part, which is franchisees and business contracts. Now what does that mean? अब तक हमने बात किया about a situation where a restrictive covenant is entered between an employer and an employee. अब employer employee के केस में क्या होता है कि हमेशा बैलेंस एक एम्प्लॉयर की तरफ टिल्टेड होता है, तो जो बार्गेनिंग पावर होती है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त वो हमेशा एक कंपनी के फेवर में रहता है. एम्प्लॉय के पास हमें कभी भी ऐसा मौका ही नहीं होता कि वो आके नेगोशिएट कर ले या फिर वो बोल दे कि नहीं ये वाला क्लॉज चेंज करके इसको ऐसे डालो, मैं वरना साइन नहीं करूंगा या करूंगी, एंड कि मतलब कंपनी ऐसा मान ले. लाइक दैट हैपेंस इन रेयर केसेस. यू कैन ट्राई नेगोशिएटिंग unless and until it's a situation where the employer really likes the candidate and doesn't want to lose them. It's very rare that such clauses are incorporated at the time of signing contracts. बट फ्रेंचाइजी या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में दो इक्वल पार्टीज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करते हैं. उसका मतलब है दो बिजनेस एंटिटीज आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एंड दिस इज समथिंग वी कॉल अ नॉन पोचिंग, अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोचिंग, वेयर यू से दैट लिसन यू कैन नॉट हायर, वी आर गोइंग टू बी वर्किंग टुगेदर, आप मेरे एम्प्लॉयज के साथ काम करोगे, मैं आपके एम्प्लॉयज के साथ काम करूंगा, लेकिन आप मेरे एम्प्लॉयज को इसके बाद सीधा एक मतलब ऑफर, जॉब ऑफर नहीं रोल आउट कर सकते हो. वी आर ऑलरेडी बारिंग दैट. So what is the validity of these clauses in such contracts is what we are going to be looking at in this third part. So franchise commercial agreement. So यहाँ पे दोनों parties and वो एक equal bargaining power से आती हैं. They are more or less on an equal platform and they undertake obligations for promoting trade for their mutual benefit. मतलब दोनों को कुछ benefit हो रहा होता है ऐसे contractual relation में, and they enter into agreements with each other. अब उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि यू कैन आइदर नॉट डील विद कंपीटिंग गुड्स और यू कैन नॉट हायर पीपल फ्रॉम माय workplace, or I can't do the same with you. And these conditions are for facilitating the distribution of the goods of the franchisor. अब ऐसे केसेस में कोर्ट्स ने अक्सर यही बोला हुआ है कि जो फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट्स होते हैं ये इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं होते, क्योंकि इसका एक लेजिटिमेट एम होता है. जैसे एक गुजरात बॉटलिंग कंपनी में कोर्ट ने बोला था दैट सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट दीज वर नॉट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब ये सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर इनवैलिड नहीं कहे जाएंगे, बिकॉज दीज आर फॉर फैसिलिटेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स ऑफ द फ्रेंचाइजर. मतलब उसका एक लेजिटिमेट एम था, उस वजह से टू इक्वल पार्टीज हैड एंटर्ड इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट इज व्हाई these will not come under the ambit of being invalid under section 27. Similarly, जब एक non poaching agreement sign होता है two parties के बीच में, so even then it is two equal parties who are signing such a contract, and because of that एक non poaching agreement को valid रखा जाता है. मतलब कल को आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है कि आप उस कंपेटिटर के पास जाके काम नहीं करेंगे, और आपको बाद में पता चलता है कि उस कंपेटिटर जिसको अब आपने ज्वाइन कर लिया है उनका और आपकी पुरानी कंपनी का भी एक अग्रीमेंट था कि हम एक दूसरे के एम्प्लॉयज नहीं उठाएंगे, तो आपके अगेंस्ट उस कंपनी के पास इतना वैलिड क्लेम नहीं होगा जितना आपके नए एम्प्लॉयर के अगेंस्ट होगा, क्योंकि वो दो इक्वल पार्टीज हैं और उनके बीच का एक नॉन पोचिंग अग्रीमेंट आर such agreements are enforced with more strictness by the courts than a post-termination non-compete which exists between you and your past employer. So that is the validity of such clauses in when they are entered into between two equal parties and two, like in as part of a franchisee agreement or in a business contract, or when you build in a non-poaching obligation between a client and a supplier. Now we'll be heading to the fourth part of this webinar, which will talk about intellectual property.
and we're going to be more or less answering the direct question that एक एक्स एम्प्लॉई अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयर मतलब कर सकता है, कर सकती है या नहीं. सो नाउ what do we call a trade secret? अब trade secrets जो होते हैं, these are concepts which are defined under intellectual property law. मतलब there is a TRIPS agreement under which trade secrets are defined to be that type of instructions or documents or manuals or know-how which is so protected, and this type of information is only revealed on a need to know basis. मतलब वो वाले employees जिनको बहुत ही ज़रूरी होता है बिजनेस रन करने के लिए, ऐसा इंफॉर्मेशन जानने के लिए, दे नो सच टाइप ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स. अदरवाइज any kind of information for which the owner of that information has taken a lot of precautions to guard their secrecy. And a third category would be for which efforts and money was already spent in obtaining and developing it. So something जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा बजटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में ऑलरेडी खर्च हो गया, ऐसी चीज़ों को ट्रेड सीक्रेट्स के ब्रॉड अम्ब्रेला के अंडर कवर किया जाता है. तो फिर what happens if such type of information is then जिस एम्प्लॉय को पता था वो नेक्स्ट जॉब में जाके वहां पे शेयर करते हैं. सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम अंडर ट्रेड सीक्रेट्स एंड देयर डिस्क्लोजर इज कम्प्लीटली बार्ड इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट. तो माइंड यू देयर हैज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट. मतलब आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ जरूरी एक नॉन डिस्क्लोजर और कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन करना ही होता है कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है. अब वहाँ पे आप क्लियरली डिफाइन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे डेटा में से कॉन्फिडेंशियल आती हैं, और एंड ऑल ऑफ दैट हैज़ टू बी समथिंग व्हिच इज़ नॉट ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन. क्योंकि अगर वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है तो वो उनके लिए डिफेंस हो जाता है कल को अगर उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया तो. एंड द ओनली एक्सेप्शंस टू दिस टाइप ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आर, जैसे एक लीगल एंटिटी उनके पास आ गई किसी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के दौरान, दे केम टू द एम्प्लॉई एंड दे आस्क्ड देम फॉर दैट मैंडेटरी डिस्क्लोजर, तो वहाँ पे उनको वो रिवील करना ही पड़ेगा. और दे नीड टू give that for cooperating with some legal process or for a statutory disclosure requirement or something like that. वहाँ पे these kind of scenarios end up being exceptions, and an employee can reveal the information in those situations. but वहाँ पे भी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बहुत क्लियरली बोलता है कि आपको एक रिटन प्रायर कंसेंट लेना ही पड़ता है जिसका इन्फॉर्मेशन है उससे. तो आप वो रिटन प्रायर कंसेंट लिए बिना इस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते, इवन इफ इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन. तो यूजुअली उसके टाइमलाइंस और किस तरीके से नोटिस देना होता है, ऑल ऑफ दिस इज कवर्ड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू दिस इफेक्ट दैट हैज टू बी फॉलोड टू द टी, वो इनवैलिड नहीं होता है. एंड अगर वो कोर्ट में जाता है तो इट इज ऑल्सो एनफोर्स्ड इन सच सिनेरियोस. So we thought we will also include one of the most latest judgments on this subject in our presentation, which was Sudipta Banerjee versus Ellis Davar. And यहाँ पे कोर्ट ने स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन डिस्कस करा था कि क्या एक्स एम्प्लॉइज ट्रेड सीक्रेट्स या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये सब चीज़ें शेयर कर सकते हैं या नहीं. तो द कोर्ट हैज ऑल्सो हेल्ड वेरी क्लियरली इन दिस केस दैट सच डिस्क्लोजर नॉट ओनली इज इट अनएथिकल, मतलब अगर आप एथिक्स के ऊपर बात करें तो इट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू, बट ऑन टॉप ऑफ दैट ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन भी है, एंड इससे जो कॉन्सिक्वेंस होता है दैट इज वेरी हाई. मतलब आप अगर आप ऐसा इंफॉर्मेशन आगे शेयर कर देते हैं तो जो ओरिजिनल ओनर को लॉस होता है या डैमेज होता है, दैट इज नॉट समथिंग विच इज ईजिली मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. क्योंकि कभी कभार उनके गुडविल को हार्म हो सकता है, कभी उनके बिजनेस प्लान्स कंप्लीटली फेल हो सकते हैं, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन अगर मार्केट में पहले पहुंच गई या किसी और एंटिटी के पास पहुंच गई, और सम टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच वाज टू बी रोल्ड आउट somebody else does it first क्योंकि there was a data leakage. So जो उनको prejudice और harm होता है that can be very वो बहुत remote तरीके तक, मतलब it is not, sometimes it's not even directly traceable, it can be very remote. and इस वजह से जो जिस एंटिटी को हार्म हुआ होता है उनके पास सिर्फ सिविल नहीं, उनके पास क्रिमिनल रेमेडीज भी अवेलेबल होती है. मतलब सिविल रेमेडीज, वी टॉक्ड अबाउट 3 of them. We said that there can be an injunction, there can be damages, or there can be return of that information. But apart from that, that company can also go and file a complaint with the police. They can go and file a complaint for fraud or cheating or dishonesty or even criminal breach of trust. So ये IPC sections के अंदर भी वो company जाके criminal action ले सकती है in these cases and these types of scenarios. So
that is the more or less the entire gist of what we were planning to cover here today. And yeah, so Kanika, is there anything you want to add? I think, ma'am, it's all good. So, like we mentioned, we both work as part of Labor Law Advisor, where we aim at creating a lot of content for people to around a lot of creating financial literacy for people. But amongst other things, we also talk about labor laws. But apart from that, we also have another platform which is run by the legal team of Labor Law Advisor, and we call that BizWiser. We talk about five broad categories there on those platforms: majorly tax, accounts, HR, business case studies, and legal information. So any of you who liked, and we hope you liked this webinar, this was useful and productive for the people who watch this. And if you like this type of content, do go and subscribe to the BizWiser page as well as follow us on Instagram. Thank you. Thank you, Shweta. Thank you. I think we are still live. Ending.